Good afternoon, students. Welcome to today's video lecture of complex numbers. Let us finish off miscellaneous exercise 5 of complex numbers. Only few questions are remaining in the exercise. Okay. Question number 4 और question number 11 बाकी है. उसके लिए वन और टू प्रॉपर्टीज जिसका यूज करना पड़ेगा वो एक बार लिख देते हैं. मॉडुलस ऑफ z रेज टू n इज मॉडुलस ऑफ z होल रेज टू n. ये याद रखने का. मॉडुलस ऑफ z1 upon z2 is modulus of z1 upon modulus of z2. Then modulus of z1 z2 is modulus of z1 into modulus of z2. Then the third property. Okay. फिर ये properties of magnitude या modulus आपको आनी चाहिए. Modulus of z is equal to modulus of z1. Then modulus of z is equal to modulus of minus z. Okay, and one few more properties which will be required. ये properties of modulus आपको याद रखनी है और properties of conjugate भी आपको याद रखनी चाहिए कि conjugate of z1 z2 is conjugate of z1 plus conjugate of z2. Conjugate of z1 minus z2 is conjugate of z1 minus conjugate of z2. Conjugate of z1 z2 is equal to conjugate of z1 into conjugate of z2, and conjugate of z1 upon z2 is equal to conjugate of z1 upon conjugate of z2, and modulus of z is equal to modulus of z bar, and modulus of z is equal to minus z bar. ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए. Okay, I will write these properties again when I will be applying, so it will be very clear to you. मैं directly नहीं apply करूँगा. And yes, one more property which was there, which was very important, which was involving z bar and mod z is z into z bar is mod z का whole square. ठीक है. So now question number 4. अपना बाकी का question number 4 of exercise 5. Question number 4 of exercise 5. It is given that x minus iy is equal to square root of a minus ib upon c minus id. This is given. And they have asked some result to be proved. तो क्या करने का? When you are involving these kind of questions, रूट है तो दोनों बाजू रूट हटा दो. कैसे करने का? रूट हटाने के लिए दोनों बाजू स्क्वायर कर दो. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट. इधर क्या मिलेगा? x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, और इधर रूट गायब हो जाएगा. a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी. फिर आपको एक प्रॉपर्टी करना है कि इफ z1 is equal to z2, then if two complex numbers are equal, then their magnitudes are equal. Then modulus of z1 is equal to modulus of z2. So वो property लगा. So these two complex numbers are equal. So therefore their magnitudes are equal. Okay. So magnitude of x minus iy the whole square will be equal to magnitude of a minus ib upon magnitude of c minus id. So magnitude of x minus iy the whole square will be equal to magnitude of a minus ib upon c minus id. अब लेफ्ट साइड में क्या करना? फॉर mod of, now mod of z raised to n is mod z whole raised to n. ये LHS में लगाने का है. And modulus of z1 upon z2 is modulus of z1 upon modulus of z2. This is to be applied in the RHS of installation. So what I will reach modulus of x minus iy the whole square is equal to magnitude of a minus id upon magnitude of c minus id. यहाँ c का क्या सकता है? But what I will do is that मैं इसको कैसे लिखूंगा? x plus minus yi. X plus minus yi. So this can be thought of as magnitude of x plus minus y into I the whole square, which is equal to magnitude of a plus minus b I whole upon magnitude of c plus minus b I. Okay.
अब मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस क्यू आई क्या होता है? नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस क्यू आई क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो यहां पे क्या है? ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर द होल स्क्वायर। डोंट फॉरगेट दिस स्क्वायर। इधर कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। और नीचे कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ c का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। दैट इज सिंपल। नाउ so what we get after applying the magnitude, that magnitude of p plus qi is square root of p square plus q square। वो लगाने के बाद यहाँ पे हमको मिलेगा square root of x square plus y square the whole square is equal to square root of a square plus b square upon square root of c square plus d square। Now ये square root का what is root k का square k, so therefore ये हो जाएगा x square plus y square is square root of a square plus b square upon square root of c square plus d square। Squaring both the sides, I believe you will get answer। Squaring both sides, क्योंकि रूट हटाना है, ठीक है। इसके बाद स्क्वायरिंग करो तो कितना आएगा आंसर? x square plus y square the whole square। रूट ऑफ a square plus b square का स्क्वायर क्या होता है? a square plus b square। और रूट ऑफ x square c square plus d square का स्क्वायर क्या होता है? c square plus d square। Simple। Yes, x square plus y square the whole square is equal to a square plus b square upon c square plus d square। Because root k का स्क्वायर होता है k। Fair enough? Easy। That's why I said वो जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिख के दिए हैं they are very very useful। और उससे क्या होगा कि जो सम्स हैं, जो लेंदी मेथड्स हैं, उससे हाफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, ऐसा और एक क्वेश्चन होगा। लेट मी डू द सेम टाइप ऑफ वन सच क्वेश्चन। यस, इट इज दैट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट मेथड। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखो, सेम पैटर्न करना है, है ना? सो हाउ विल डू नाउ? So, what is the question number 11 they have given? They have given in question number 11 a plus ib. A plus ib is equal to x plus I the whole square, whole upon x plus I the whole square upon 2x square plus 1. Okay, and this is given. Now see here, x here, you remember a, b, x. They are all real numbers. They are all real numbers. तो एक नोट बता देता हूँ. This is not a part of solution. If you don't show this, तो भी चलेगा. Now, x square कैसा आएगा? Greater than equal to 0. तो अगर मुझे 2x square plus 1 का नेचर चेक करना है, तो multiply by 2, which is positive. What I end up getting? I will end up getting when you multiply by a positive number, there is no change in the inequality. So 2x square is greater than equal to 0. So therefore, adding 1, 2x square plus 1 is greater than equal to 0 plus 1. So you know, 2x square plus 1 is greater than equal to 1. And this is very very obvious. क्योंकि x square का मिनिमम वैल्यू क्या है? x square का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तो वो सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। It is greater than equal to 1. तो कहने से 2x square plus 1 is positive। ये आपको याद रखना। Now, सॉल्यूशन में आते हैं। a plus ib is x plus I the whole square whole upon 2x square plus 1. Two complex numbers are equal. So what is our here? If two complex numbers are equal, if z1 is equal to z2, then magnitude of z1 is equal to magnitude of z2. So therefore, modulus of a plus ib is equal to magnitude of x plus I the whole square whole upon 2x square plus 1. Some students will say, sir, 2x square plus 1. Yes, you can think this is 2x square plus 1 plus 0 I complex number here. Now, what is magnitude of a plus ib? Root of a square plus b square. Fair enough, left to right. So that is not a big issue. Right के लिए क्या करोगे? Right के लिए individual magnitude देखो.
So magnitude of now magnitude of p plus qi is square root of, or p plus iq. P plus iq is p square plus q square. That has to be applied in the LHS. और RHS में क्या लगाना पड़ेगा? And magnitude of z1 upon z2 is magnitude of z1 upon magnitude of z2. That has to be applied in the RHS. सब्जेक्टिव में आपको प्रॉपर्टी लिखने पड़ेंगे. तो स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस i द होल स्क्वायर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1. वेरी क्लियर डन. अब आपको पता है कि 2x स्क्वायर प्लस 1 आगे हमने बता दिया 2x स्क्वायर प्लस 1 is positive as 2x square plus 1 is greater than equal to 1. So therefore magnitude of 2x square plus 1 क्या है? 2x square plus 1 modulus of x is x if it is positive. So based on that logic और left में तो यहाँ पे we will end up getting square root of a square plus b square is magnitude of x plus I the whole square upon 2x square plus 1. Now, 2 steps we are away from the answer. Okay, just 2 or 3 steps we are away from the answer. Now, z raised to n. Modulus of z raised to n क्या होता है? Mod z whole raised to n. Oh, that property you have to apply. Square root of a square plus b square is magnitude of x plus I the whole square. Okay, upon 2x square plus 1. Now, x plus I can be thought of as x plus 1i. वो खाली x स्क्वायर का लिख रहा हूँ. किसी को अगर डाउट रहे तो फिर कुछ स्टूडेंट्स उसको i लिख के उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. It is very strange. a square plus b square is x plus I को कैसे लिखने का? मैग्नीट्यूड ऑफ x plus रियल पार्ट इसका x है. x plus 1i the whole square whole upon नीचे कितना है? 2x square plus 1. So magnitude of p plus qi क्या था? p square plus q square. And magnitude of p plus qi is square root of p square plus q square. तो p की जगह पे x लिख रहा है, q की जगह पे 1 लिख रहा है. You can directly write p square plus 1 square. So square root of a square plus b square is square root of इधर आएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1. So you write down this root of a square plus b square. Root of a square plus b square is equal to square root of x square plus 1 the whole square upon 2x square plus 1. Don't you think answer has come? Yes. Root a का स्क्वायर a होता है तो यहाँ पे कितना आएगा? x square plus 1 and then square both the sides. I believe you will get the answer. यहाँ पे कितना है? x square plus 1 upon 2x square plus 1 and squaring both the sides you will get the answer. So you follow the basic steps, the properties which are given, squaring both sides. We get ये रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर कर रहे हैं तो सीधा आंसर आएगा a square plus b square is x square plus 1 the whole square upon 2x square plus 1 the whole square. Is it answer? Yes, it is the same. Perfect. Oh, now more question. I believe still 2 or 3 questions are remaining. ये सम्स बहुत इजी हैं, एक ही पैटर्न में है. आप एक दो बार करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा and definitely you will not end up committing mistakes. They are very simple. Okay. 16 question was remaining. Question number 16 was remaining. That is a very good question that is asked in JEE Mains. Here x plus iy the whole cube is equal to u plus iv. They are given and something they have asked to prove. तो पहले क्या करते हैं? u plus iv
is equal to, can I write this as x plus I by the whole cube? Now a plus b the whole cube का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है मैं लिख देता हूं, a plus b the whole cube क्या होता है? a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Here a की जगह पे x, b की जगह पे I y, this has to be applied in RHS. So what we end up doing? We end up u plus ib is x the whole cube plus iy the whole cube plus 3 into x into iy into x plus iy. मल्टीप्लाई करना है, फिर i square की जगह में -1 लिखना है, compare the real and the imaginary parts, and yes, then you will get the answer. That is not very tough. Okay, it is not very tough. So u plus ib, therefore u plus ib will be x cube plus I cube into y cube plus multiply करता हूँ 3xy, so 3x square yi plus 3x y square I square. Okay, हाँ पहले से लिखेंगे u plus ib is x cube plus I square into I into y cube plus 3x square yi plus, okay fine. इधर 3 into x y, so इधर 3xyi into x plus iy और अब मल्टीप्लाई करो, बेटर रहेगा 3xy, so 3 square yi plus into plus 3x y square I square. Okay, now we substitute I square की जगह पे -1, तो कितना आएगा? x cube plus -1 into I into y cube plus 3x square yi plus 3x y square into -1. It's a good habit to mention I square is equal to -1. Okay, so therefore u plus ib is equal to x cube plus into minus कितना आएगा? x cube minus y cube I plus 3x square yi plus into minus 3x y square. Right side में club the terms with I and club the terms which are without I, और फिर equality of complex numbers लगाना है. Real part is equal to, both two numbers are equal to, complex numbers are equal, then the real parts and imaginary parts will be equal. So u plus ib I will write as x cube minus 3x y square plus 3x square y I minus y cube I. Can I write this as u plus ib is equal to x cube minus 3x y square plus I into 3x square y minus y cube. Now if z1, if two complex numbers are equal, if z1 is equal to z2, then can we write real part of z1? ये लिखें, उससे अच्छा I will write a plus ib is equal to c plus id. If two complex numbers are equal, then a is equal to c and b is equal to b. Easy way to understand. If a plus id is equal to c plus id, the real parts a and c will be equal, the imaginary parts b and d will be equal. So equality of complex numbers से यहाँ पे सीधा क्या है? u is equal to x cube minus u is equal to x cube minus 3 xy square and b becomes equal to 3x square y minus y cube. Okay. Now you see यहाँ से x कॉमन निकल सकता है. So x square minus 3 square y square, result number 1, and b is equal to y common 3x square minus y square. Prove that part में अगर आप देखो prove that part में अगर आप देखोगे prove that part में u by x b by y है. Yes, तो उसका मतलब x 0 नहीं होना चाहिए और y भी 0 नहीं होना चाहिए.
So divide both the sides by x. X not equal to 0, y not equal to 0. So just divide by. So u by x becomes x square minus 3y square, which is result number 1, and v by y is result number 1, and v upon y becomes equal to 3x square minus y square, result number 2, and you just write because x not equal to 0, y not equal to 0. Okay, now LHS लिख के करना है, तो LHS prove that है LHS is equal to RHS. Yes, let's show that. हाँ, तो 1 plus 2 भी कर सकते हैं. LHS क्या लिखा है? u by x plus v by y. u by x कितना है? x square minus 3y square plus 3x square minus y square. Just add result number 1 and 2 and you get the answer. या 1 plus 2 किया होगा तो भी चलता. It's your method how you are doing. 3x square plus x square is 4x square minus 4y square. 4 is common, so 4 times x square minus y square. This is a question asked in maths, and sometimes this is one of the types which comes many times in many competitive exams. So 4 times x square minus y square is equal to RHS. Right, by 1. और what I prefer, क्योंकि इस पूरे रिजल्ट में डायरेक्टली u और v से शुरू नहीं करना है, सो बेटर है पहले इस इक्वल टू RHS ना करें. आप क्या करो, सीधा ये भी चलेगा, बट आई प्रेफर 1 plus 2. जो रिजल्ट हमको प्रूव करना है, दैट इज बेटर वे ऑफ राइटिंग. 1 plus 2 gives, so u by x plus v by y is equal to, because generally LHS is equal to RHS वाले क्वेश्चन में सीधा LHS शुरू करते हैं. यहाँ पे हमने मेजॉरिटी 90% सॉल्यूशन तो u निकाला, v निकाला, u by x निकाला, v by y निकाला, all that stuff करने के बाद, so it's better to write this way only. But if you write that way, जो पहले मैंने लिखा था, तो टीचर will give you, okay, that is also correct. u by x plus v by y square plus 3x square is 4x square minus 4y square. So u by x plus v by v is, so u by x plus v by y is 4 times x square minus y square. True? Easy? Not at all tough. So the exercise, miscellaneous exercise is over. No, still one question is remaining. It's question number 17. That's a very good question. उसके बहुत सारे अलग-अलग मेथड. So let me try a method and give you the answer. Here, question number 17. उसको मार्क करना, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. For a 2 mark के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है. If alpha and beta are different complex numbers. Here, alpha and beta, they are complex numbers. They belong to C. And alpha is not equal to b. That is given. Okay. Also, modulus of beta is equal to 1. That is given number. That is given. इसको result number 1. Okay. So this all both are result number. Now they have asked find. Okay. They have asked to find the value of magnitude of beta minus alpha of 1 minus alpha bar means conjugate of alpha into beta. क्या करो? बीटा का मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है. इसके लिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं. जैसे हमने C1 का I'll do the method and you understand. Okay. Here it is given. We have to find therefore modulus of beta minus alpha whole upon 1 minus alpha bar into beta is asked. 1 minus alpha bar into beta is asked. Okay. Modulus of beta is 1. Modulus of beta is 1. So what I am doing is that मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं बीटा बार. Okay. So 1 minus alpha bar beta into beta. मैग्नीट्यूड के अंदर मैंने बीटा बार से मल्टीप्लाई किया. Right. Multiply. Okay.
I believe that is understood. Multiplying and dividing. Okay. बीटा बार से मल्टीप्लाई किया, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, और नीचे ब्रैकेट में लिखो 1 माइनस अल्फा बार बीटा, 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार. What is step I did? Multiply numerator and denominator by बीटा बार. अब ऊपर में ऐसे ही रखो, ऊपर वाले में ना मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है? मॉडुलस ऑफ 1 minus alpha bar is equal to, now what I will do is magnitude of z1 upon magnitude of z2 is numerator में magnitude दो, magnitude of 1 beta minus, that becomes magnitude of beta minus alpha into beta bar whole upon magnitude of 1 minus alpha bar into beta whole into beta bar. Because magnitude of z1 upon magnitude of z2 is magnitude of z1 upon magnitude of z2. That we apply in the RCS. Okay. Up beta minus alpha whole upon 1 minus alpha bar beta. क्या करो? ऊपर जो है उसको ऐसे ही रखना है, उसको आप इंडिविजुअली देखो. ऊपर मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ mod of z1 into z2 mod z1 into mod z2. इसके मैं इसको लिख रहा हूँ mod of beta minus alpha into mod of beta bar into mod of beta bar. और नीचे मैं लगा रहा हूँ, मैं नीचे बीटा बार अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, बीटा माइनस अल्फा होल माइनस अल्फा बीटा. ओके. और नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे ये बीटा बार को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 1 into बीटा बार इज बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा into बीटा बार. Am I clear? और हाँ, न्यूमरेटर में क्या लगा प्रॉपर्टी? Magnitude of z1 z2 is magnitude of z1 into magnitude of z2. न्यूमरेटर में लगा. Now you know z into z1 क्या होता है? z into z bar क्या होता है? z into z bar क्या होता है? z into z bar mod z square होता है. तो बीटा into बीटा बार कितना होगा? mod बीटा स्क्वायर. ओके. इसके लिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बीटा बार से मल्टीप्लाई किया. सो मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा is equal to, we will keep this as it is. So magnitude of beta minus alpha into magnitude of beta bar whole upon, just one minute. Okay. और हाँ, नीचे कैसे लिखोगे? बीटा बार माइनस अल्फा बार into beta bar. So there magnitude of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar into beta is equal to magnitude of beta minus alpha into magnitude of beta bar whole upon magnitude of beta bar minus alpha bar or conjugate of beta minus alpha bar. What is beta into beta bar? Mod beta the whole square. Because z into z bar is mod z square. ठीक है? mod beta कितना है? 1. So mod beta square कितना होगा? 1. Okay. Now we are almost there with the answer. Almost there with the answer. So modulus of beta minus alpha whole upon 1 minus alpha bar into beta, numerator में कितना है? Magnitude of beta minus alpha into magnitude of beta bar whole upon, this becomes magnitude of beta bar minus alpha bar, magnitude of beta bar minus alpha bar into 1, because as magnitude of beta is 1, magnitude of beta the whole square is 1. और you want to write it, write as 1 square, वो भी चलेगा, और 1 square into anything is the same thing. So not comfortable directly writing 1. आप क्या लिखो? mod beta कितना है? 1. mod beta square ऐसे लिखो खाली.
into 1 square into 1 square into because simple because magnitude of beta is what खाली सब्स्टिट्यूट किया है 1 square so magnitude of beta minus alpha into magnitude of beta whole upon here let's say magnitude of beta bar minus alpha bar. Okay, now you see दो तीन कंजुगेट के प्रॉपर्टीज लगाने पड़ेंगे. ओके now can you recollect z1 conjugate minus z2 conjugate z1 conjugate minus z2 conjugate can I write as z1 minus z2 the whole conjugate. So based on that line can I write understanding or not. So based on that logic यहाँ पे राइट साइड है बीटा बार माइनस अल्फा बार है. So therefore beta bar minus alpha bar can be written as conjugate of beta minus alpha conjugate of beta minus alpha. So applying that thing को लॉजिक लगाने पर क्या हो जाएगा because यहाँ पे आ जाएगा beta minus alpha whole upon 1 minus alpha bar beta is equal to magnitude of beta minus alpha into magnitude of beta bar whole upon. I should have written starting में चलेगा क्या ना राइट ये कितना हो जाएगा बीटा माइनस बीटा बार माइनस अल्फा बार कितना है बीटा माइनस अल्फा कंजुगेट कैन आई राइट इट एज बीटा माइनस अल्फा द होल कंजुगेट. नो प्रॉब्लम. नाउ मैंने आपको क्या सिखाया था मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z मतलब magnitude of a complex number is equal to magnitude of its conjugate. So for any z belongs to C also magnitude of z is equal to magnitude of z bar. Therefore magnitude of beta minus alpha is equal to magnitude of beta minus alpha. Or okay, now let also magnitude of z bar is equal to magnitude of z. No problem. So can I write z की जगह पे beta minus alpha को so therefore magnitude of beta minus alpha magnitude of conjugate of beta minus alpha will be equal to magnitude of beta minus alpha. Yes or no? और यहाँ पे किसी को डाउट है तो z1 की जगह पे बीटा है और z2 की जगह पे अल्फा है और यहाँ पे z की जगह पे ये रिजल्ट बीटा माइनस अल्फा है. क्लियर? किसी को अगर डाउट रहता है z1 की जगह पे बीटा सोचो z2 की जगह पे अल्फा सोचो ऊपर वाले so and substitute what do you end up with so ultimately we come to which conclusion modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta is equal to magnitude of beta minus alpha whole upon magnitude of beta bar whole upon कितना हो जाएगा मैंने यहाँ लिखा magnitude of conjugate of beta minus alpha will be equal to magnitude of beta minus alpha. Yes or no? Clear? मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ मतलब वो खाली बात से प्रॉपर्टी लिख दूँ तो सॉल्यूशन बहुत छोटा हो जाएगा but you understand the better way that's why I did in detail. Now it's very simple. Alpha and beta are not equal, so the magnitude will not be zero, तो cancel हो जाएगा. और mod beta bar will be equal to mod beta कितना है 1. So ये 1 answer will be 1. I know. I believe answer has to be 1. Now टेक्स्ट बुक में क्या दिया है अल्फा दो कंडीशंस का हमने अभी तक यूज नहीं किया पहली कंडीशन का हमने यूज नहीं किया अल्फा एंड बीटा आर दिस डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हियर अल्फा is not equal to beta therefore beta minus alpha is not equal to zero complex number 4 therefore magnitude of beta minus alpha is not equal to 0 तो कैंसिल हो सकता है yes इसके लिए वो दोनों अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसलिए mod of beta minus alpha actually mod of beta minus alpha will be positive इसके लिए आप इसको उड़ा सकते हो. I am not writing many steps simultaneously.
फिर आपको कंफ्यूजन होगा, अलग सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है. सो प्रैक्टिस इट फॉर 2 to 3 times, you will get an idea. बीटा माइनस अल्फा, ये स्टेप वापस में लिखा एंड ये दिस गेट्स कैंसिल. कोई भी चीज कैंसिल कब होती है जब वो नॉन जीरो होती है, राइट? सो वी आर लेफ्ट विद दिस होल एक्सप्रेशन कम्स डाउन टू ओनली मॉडुलस ऑफ बीटा बार. यस, मॉडुलस ऑफ बीटा कितना है? 1. सो मॉडुलस ऑफ बीटा बार कितना होगा? आंसर इज 1. सो देयरफॉर वी आर लेफ्ट विद मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा is equal to magnitude of beta bar. Now, mod of z bar is equal to mod of z. Yes or no? Now, mod of z bar is equal to mod of z. So mod of beta bar कितना होगा? So therefore, mod of beta bar is mod beta. The substitute is equal to mod of beta. What is mod beta? 1. So answer has to be 1. Yes. Let me take the answer. So mod beta is 1. Therefore, magnitude of beta minus alpha, magnitude of beta minus alpha, 1 minus alpha bar into beta is 1. Is equal to 1 because magnitude of beta is 1. Answer. Question number 17. Exercise 5. Typical question है, 2 मार्क्स के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, अच्छा है. Question number 17. Yes, answer is 1. So there is one more. There are, you can say, more 2 or 3 methods which we can apply, but I will prefer this method. अभी मेरे को ये सूझा, there are 2 or 3 more methods that you can get this answer. I have no problem. Easy, based on properties which we have done very nicely. So that finishes the exercise, miscellaneous exercise 5. Okay, now there is one topic, square root of a complex number. हाँ, इसके illustration अच्छे हैं. That I will cover in a you can say coming up video lectures. I will solve maybe daily one such important illustration so that आपका revision होता रहेगा. But I might take 1 or 2 video lectures covering all the important illustrations of complex numbers. So don't worry about it. There is one more topic which is remaining. The supplementary material on page number 474, which is exercise 5.4, which is square root of a complex number. Topic क्या है? Square root of a complex number. Square root of a complex number. It is very very important from, you can say, entrance exams, mains, and other competitive exams. So that's why let us solve those questions. Okay, example 12 से start करते हैं. Example 12 question है, find the square root of minus 7 minus 24i. कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? इसका स्क्वायर रूट ढूंढना है. -7 minus 24i. तो सपोज let square root of -7 or let square root of -7 minus 24i is equal to x plus iy. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा. तो सपोज इसका स्क्वायर रूट इज x plus iy. So can I write x plus iy is equal to square root of -7 minus 24i. Yes. To remove x और y ढूंढना है, squaring both sides. Square करो, squaring both sides. Squaring both sides. ठीक है. लेफ्ट में क्या मिलेगा? x plus iy the whole square is equal to -7 minus 24i. What you do is that left में directly square करो. I will write a square x square plus a plus b the whole square x square plus b square. So I square y square plus 2 into x into iy which is equal to -7 minus 24i. What is I square? I square is -1. So I end up getting x square minus y square plus 2xyi is equal to -7 minus 24i because I square is -1. ठीक है, I square -1 है, इससे सीधा चलेंगे. Okay, now what has to be done? X और y ढूंढना है.
Comparing the real and the imaginary parts. Comparing the real and imaginary parts of both the sides. Okay. If simple. If a plus id is equal to c plus id, then real parts are equal. A is equal to c and b is equal to d. Yes or no? Simple. So comparing the real part. The real part क्या है? x square minus y square. The real part क्या है? Minus 7. So x square minus y square is equal to minus 7 and इधर imaginary part क्या है? I का coefficient क्या है? 2xy और उधर I का coefficient along with the sign is minus 24. So I end up getting x square minus y square is minus 7 and xy is equal to minus 12. Simple. यहाँ तक आप पहुंच गए होंगे. यहाँ तक कोई rocket science नहीं है. Now what I will do is that I will follow the method which is given in the textbook. Xy is minus 12. Sorry, x square minus y square is minus 7, which is result number 1, and xy is equal to minus 12, which is result number 2. Now, what the textbook solution textbook method suggests, उन्होंने एक फॉर्मूला यूज किया है x square plus y square को निकालो. See, यहाँ से y आप सब्स्टिट्यूट कर दो पहले इक्वेशन में, and you can end up getting, but it's better कि हम टेक्स्टबुक का मेथड ही फॉलो करें. So because काफी स्टूडेंट्स टेक्स्टबुक का मेथड फॉलो करते हैं, काफी स्टूडेंट्स का टेक्स्टबुक का मेथड भी दिया जाता है. नाउ a plus b the whole square is equal to, can I write as a minus b the whole square plus 4ab, where at the place of a is x square and here b की जगह पे y square. So applying that, can I write x square plus y square the whole square is equal to a minus b means x square minus y square the whole square plus 4 into x square y square. So x square plus y square the whole square is equal to x square plus 2ab. Yes, are you ready for the fact? Yes. We have got that identity only, and this becomes x square minus y square the whole square plus 2 times xy the whole square, which is equal to x square minus y square is minus 7. So minus 7 the whole square plus 2 into what is xy? 2 into minus 12 the whole square. So 49 plus 2 into minus 12 is minus 24. So minus 24 का square कितना आएगा? 576. So 576 plus 49 gives us 625. So x square plus y square. X square plus y square the whole square is 49 plus 576, which is 625. Which is 625. So therefore, x square plus y square the whole square is 625. Now, sum of the square x square plus y square. X square is greater than equal to 0. Y square is greater than equal to 0. So sum of the square फॉर्म में पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव. X square plus y square. You will have to take as 25 only because x square plus y square is greater than equal to 0. Sum of the squares. X square का minimum value greater than equal to 0. Y square का minimum value greater than equal to 0. Okay. This is our relation number 3. x square minus y square क्या था? x square minus y square minus 7 था by result number 1 और xy था minus 12 by result number 2. That is by 1 and 2. Okay. So अब पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके x square और y square आपको निकालना है. पहले और दूसरे इक्वेशन, पहले और तीसरे इक्वेशन. See, this is the method which they have given in the textbook. So we solve. Third और first equation को add करो. X square plus y square is 25. X square minus y square is minus 1. This is 3. This is 1. Add करो. 3 plus 1 करो. Y square gets cancelled. X square plus x square is 2x square. This is 24. So x square कितना आएगा? 12. X square is 12. X square is 12. तो x क्या है? Okay, x square is 12. Now what you do is that x square is 12 and फिर क्या करो? X square plus y square is 25. So x square is 12 plus y square is 25. Square बनाता है. X square plus y square is 25.
square is 9. Square minus y square is minus 7. Sorry, minus 1 mistake किया मैंने. Sorry, यहाँ पे minus 7 आएगा. 25 minus 7 तो 18 हो जाएगा. तो x square 9 आएगा. Square आएगा. Sorry, square is 9. Therefore 9 plus y square is 25. So y square कितना आएगा? 25 minus 9, which is 16. 25 minus 9. Therefore y square is 16. So we end up getting x square is 9, y square is 16. Okay, this is the method we follow. So x क्या हो सकता है? Plus or minus 3 और y क्या हो सकता है? Plus or minus 4. But xy क्या है? xy क्या है? xy का प्रोडक्ट देखो आप. xy इधर x और y मिल गया. Some should be very very happy. No. What do you do? Is that x square मिल गया? ना. y square मिल गया 16. x is equal to plus or minus 3, y is equal to plus or minus 4. अब xy का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. xy कैसा है? minus 12. So here xy is less than 0. प्रोडक्ट इज नेगेटिव. और जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो एक कैसा होना चाहिए? एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. therefore what are the possibilities? x is greater than 0 and y is less than 0, or x is less than 0 and y is positive. Yes or no? X positive to y negative or x negative to y positive. So here we are left with x is equal to क्या था? plus or minus 3, y is equal to plus or minus 4. So for अगर मैं x को 3 रखता हूं तो y नेगेटिव होना चाहिए, so minus 4. and or for yes or no, ये दो केसेस हैं तो पहले केस में क्या जाएगा? so for x is equal to 3, y के साथ नेगेटिव लेना पड़ेगा, so y will be minus 4. आप चेक करो xy minus 12 है. और स्क्वायर रूट क्या था? स्क्वायर रूट क्या था? x plus i का कितना था? 3 plus i into minus 4 कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ minus 7 minus 24i कितना आया? 3 minus 4i. ठीक है. और सेकेंड केस में आप जाओ, x को अगर आप माइनस 3 रखते हो तो y क्या आना चाहिए? x को आप माइनस 3 रखते हो तो y क्या आना चाहिए? सेकेंड लेट x एज minus 3 तो y का पॉजिटिव आना चाहिए. सो फॉर x इज इक्वल टू minus 3, y के साथ आना चाहिए नेगेटिव पे पॉजिटिव, सो y will be 4. ओके, एंड देन द स्क्वायर रूट सीधा निकाल दो. स्क्वायर रूट ऑफ minus 7 minus 24i is x plus iy, which is minus 3 plus 4i. Square root of minus 7 minus 24i is minus 3 plus I into 4, which is minus 3 plus 4i. So when you plug 3, it is 3 minus 4i. 3 minus 4i. Yes, you check the answer. Yes, 3 minus 4i and minus 3 plus 4i. Perfect. ठीक है. कैलकुलेशन काफी स्किप करते हैं और लॉजिक हमको लगाना पड़ेगा अच्छी तरीके से. दैट्स व्हाई आई होप दिस इज क्लियर. एक्सरसाइज 5.4 में देयर आर 6 क्वेश्चंस. लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. जस्ट 1 मिनट. सो एक्सरसाइज 5.4. Okay, it is given on page number 474 and 475. 474 and 475. लॉजिक तो एक ही है. ठीक है. So now find the square roots of the following. तो पहला और दूसरा है. Let me do the first question. First और second question है उसमें. Let me do the first question. Let square root of minus 15 minus 8i is equal to x plus i1. You write x is a real number, y is a real number. उसका square root होता है. So let square root of 15 minus 8i is equal to x plus i1. x plus i1 क्या हो जाएगा students? x plus i1 is equal to square root of plus iy is equal to square root of minus 15
माइनस 8i। अब क्या करेंगे, x और y ढूंढना है। What is the method? Method given in the textbook is we will be squaring both the sides. Squaring both the sides, you will end up getting x square and y square. वहां तक आप easily कर सकते हो। Okay, so no need to worry. Squaring both the sides. Squaring we get जब कितना आएगा x plus i y the whole square is minus 15 minus 8i। इधर हो जाएगा a square x square plus I square y square plus 2 into x into 2 into a is equal to minus 15। Okay, मैं इसको लिख देता हूँ minus 15 minus 8i। So I will write what is I square minus 1, so x square minus y square plus 2xyi is equal to minus 15 plus minus 8i. What the result which we are getting? I square is minus 1. Now if a plus bi is equal to c plus bi, then a is equal to c and b is equal to b. Equality of complex numbers. Therefore, x square minus y square is minus 15 and 2xy is minus 8. 2xy is minus 8. Okay, so you end up getting x square minus y square and xy. Okay, so x square minus y square कितना आएगा? X square minus y square which is 1, that is result number 1, and xy is minus 4. xy is equal to minus 4. Okay, first or xy is minus 4. That is divided. Fair enough? Now you know the formula. We are interested to find x square plus y square. So write the formula in the case now. A plus b the whole square is a minus b the whole square plus 4a square b square। a की जगह पे x square, b की जगह पे y square। So here x square plus y square the whole square is x square minus y square the whole square plus 4 x square y square डायरेक्टली लिख सकते हो। Now what do you do? वैल्यू साथ में रखते हैं, that's why or you can substitute x square plus y square the whole square is what is x square minus y square? You can substitute at the same time x square minus y square the whole square plus 2xy the whole square। And what you can do is that here is to complete the result number a क्या पॉसिबल है, और वो रिजल्ट नंबर 1 और 2 है। अगर आप ध्यान से देखो x square minus y square minus 15 है और 2x square minus 3 है, कोई डाउट है तो सीधा ये रिजल्ट नंबर a से x square minus y square की जगह minus 15 2xy is minus 18। So x square plus y square the whole square is minus 15 the whole square plus minus 8 the whole square y result a। करेंगे एडिंग कर दो, कितना आएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 minus 8 का स्क्वायर 64 289 so it will be 17 का स्क्वायर। So x square plus y square the whole square is 225 plus 64। So x square plus y square the whole square is 289। Now x is a real number, y is a real number, so x square plus y square has to be greater than equal to 0। So therefore x square plus y square will be positive square root of 17 only। Okay, because x square plus y square is greater than equal to 0। Don't write as direct 25 only। Example है और you want to write 17 square, don't write plus or minus 17 का square, positive क्यों लिखा because it is greater than equal to 0। Okay, for you means the reason x is a real number and y is a real number because for x and y which are real numbers sum of the squares has to be greater than 0। So x square plus y square मिल गया, so x square plus y square तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, वो लिखो x square plus y square is 17। x square minus y square कितना है, x square minus y square is minus 15। रिजल्ट नंबर 3 is रिजल्ट नंबर 1 ऐड कर दो 3 plus 1 x square 2x square 17 minus 15 2 so x square कितना आएगा 1 x square कितना आया 1 so x square is 1।
Now x square plus y square कितना है 70, तो x square की जगह पे मान लीजिए तो y square कितना आएगा 16. So x square is 1, y square is 16. Almost there is the answer. So therefore 1 is plus y square. Therefore 1 plus y square is 17. So y square is 17 minus 1. So y square is 16. So x square कितना है 1, y square कितना है 16. We don't know whether x and y are positive or negative. So I am using the method which is given in the textbook. So to avoid any confusion, x is equal to plus or minus 1, y is equal to plus or minus 4. Now here xy कितना minus 4. This is result number 2. So therefore xy is less than 0. Product of two numbers is negative. So therefore क्या होना चाहिए? दो केसों में x is positive, तो तब y negative होना चाहिए, और x is less than 0 and y has to be positive. Because product of two numbers is negative when one is positive and the other is negative. Right? Yes. Now coming to the calculation portion. Coming to the calculation portion. तो कितना आएगा? Let's go here. Now x क्या था? Plus minus 1. X था plus, x is plus minus 1. Y is plus minus 4. Right here. तो पहले केस में क्या करोगे? X if I select, तो what is the possibility? X if I select 1 positive, तो y negative होना चाहिए. So y has to be minus 4. Now square root of question क्या था? Square root इसका होता है minus 15 minus 8i. Minus 15 minus 8i is x plus i1. Substitute कर दो. 1 plus I into minus 4. So therefore square root of minus 15 minus 8i is 1 minus 4i. The first answer. Second case में x to select as minus 1, x को negative select करो minus 1, तो तब y positive आना चाहिए 4. So therefore square root of minus 15 minus 8i is x plus iy, which is minus 1 plus I into 4. So what is the answer? Minus 1 plus 4i. Minus 1 plus 4i. That's the way you write the square root. अलग-अलग से लिखोगे तो भी चलेगा. है ना? हाँ. टेक्स्ट वाला अलग से लिखता है तो give them final answer. Minus 4i और square root of minus 15 minus 8i turns out to be minus 1 plus 4i. Minus 1 plus 4i. Therefore square roots are, पहला स्क्वायर रूट क्या है 1 minus 4i और दूसरा स्क्वायर रूट है minus 1 plus 4i. Okay, right? So that's question number 1. I believe आप लोगों को सेकंड खुद से कर लेना चाहिए. सेकंड आपको खुद से कर लेना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम टाइप. लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 4. Let square root of I is equal to x plus i1, where x is a real number, y is a real number. Therefore x plus iy is x plus iy is square root of I squaring. Squaring क्या मिलेगा? x plus i1 the whole square is I. Root I का square क्या आएगा? Root I का square आएगा I. Now see sometimes some students direct write x square minus y square plus 2xy I direct इसके बाद. आपको डिपेंड करता है कि आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं कि नहीं. सो a plus b का होल स्क्वायर में क्या लग रहा है? a square plus b square plus 2a into b is equal to I को कैसे लिख सकते हैं? 0 plus I. So I square is minus 1. So x square minus y square plus 2xy I, and 0 plus I can be thought of as 0 plus 1. Clear? Yes. Because x square is minus 1. Now comparing the real and imaginary parts, I am not writing or equivalent and complex numbers. Basically, लिख रहा हूँ a plus b है, so c plus a है. Then real parts are equal. Then a is equal to c. B is equal to B. Therefore,
डायरेक्टली यूज करना है। Therefore, x square minus y square is 0. That is equation number 1. And xy कितना है? हाँ, that is our result number 2. x square minus y square is 0 and xy is equal to 1. अब इधर x square is equal to y square. हाँ, that is better. X square is equal to y square becomes the first equation. Okay, x square is equal to y square. X square minus y square is 0. Therefore, x square is equal to y square. That is our first equation. And 2 से divide कर दो, xy is equal to half. Now follow the formula. X square plus y square चाहिए. Now, if you are comfortable, you can write directly. But some students they end up committing some mistakes. So it's better you write this formula. Okay. This becomes x square plus y square the whole square. X square plus y square the whole square is x square minus y square. X square minus y square the whole square plus 4x square y square. Therefore, x square plus y square the whole square is x square minus y square the whole square plus 3xy the whole square. रिजल्ट नंबर a से ही आपको पता चल जाएगा x square minus y square कितना है 0 और 2xy कितना है 1. तो सब्स्टिट्यूट कर दो. सो रिजल्ट नंबर a square plus y square the whole square is 0 का स्क्वायर plus 2xy is 1 the whole square 3. By result a cross by 8. Okay, now expand x square plus y square कितना आता है x square plus y square the whole square is 0 plus 1, so it is 1. And sum of the squares, x is a real number, y is a real number, so x square plus y square is greater than or equal to 0. So x square plus y square will be positive root of 1, which is 1. Okay. So x square plus y square is 1. Therefore, x square plus y square का मतलब 1. Therefore, when I take the positive square root भी लेना पड़ेगा because sum of the squares is 1 because reason for x and y, for real numbers x and y, sum of the squares is equal to 0. Now, what you get? See, so x square plus y square is 1. That is our result number 3. So, third और fourth result क्या है? My result number 1 क्या है? Now, x square is equal to y square. That is equation number 1. Sorry, and x square plus y square is 1 in relation to equation number 3. So put y square in यहाँ पे x square. Therefore, now x square is equal to y square by 1. So therefore, x square plus y square equal to 1 क्या हो जाता है? x square plus x square is 1. Yes, y is 1. And then you solve. X square plus x square कितना है? 2x square. X square plus x square is 2x square is 1. So x square कितना आया? 1 by 2. Y square is equal to x square and x square is equal to y square. So y square कितना आया? 1 by 2. So x square is 1 by 2. Sorry, x square is 1 by 2. Y square is 1 by 2. So x is plus minus 1 upon 2. Y is also plus minus 1 upon 2. So therefore, y square is 1 by 2. Therefore, x square is half. Y square is half. So, based on the calculation which we did, the value of x will be plus minus 1 upon square root of 2, or y can be plus minus 1 upon square root of 2. But we have to take care of xy is equal to कितना? xy कितना? 2xy was 1. Fifth argument. This is 1. So 2xy कितना है? 2xy is question क्या है? 0 plus 1 आया. So x square minus y square is 0. 2xy was 1. 2xy was 1. xy was half. Now here xy is half. That is our equation number 2. 2xy 1. So when I say xy is positive,
Now product of two numbers xy is positive, so product of two numbers is positive है, product of two numbers is positive, इसका मतलब therefore क्या होना चाहिए, both are positive, so x is positive and y is positive, or both are negative, so x is less than 0 and y is less than 0. Yes or no? And here we are having x का वैल्यू क्या है, plus minus 1 by root 2 and y is plus minus 1 by root 2. So if I select x as 1 by root 2, y भी क्या होना चाहिए, 1 by root 2, x positive, y positive, x negative, y negative. So first case, x, if I select 1 by root 2, at that time y has to be 1 by root 2. Okay, and then the square root, that is the square root था x plus iy. Square root था x plus iy. Instead of therefore square root of question था, sorry, square root of I. इसको नंबर है, therefore square root of I. Square root of I is x plus iy, which is 1 by root 2. 1 by root 2 plus I into 1 by root 2. Therefore, square root of I turns out to be 1 by root 2 plus 1 by root 2I. Answer is right. Yes, 1 by root 2 plus 1 by root 2I. That is easy. Second case, x you take as negative, x you select as negative minus 1 by root 2. ये इस पे फोकस करेंगे. X positive, y positive, x negative, y negative. That's why copy x, y positive y. ठीक है, इजी है. x is select as negative, so at that time y has to be minus 1 by root 2, and then you go for the square root of y, which is root of y is x plus iy. So answer will be minus 1 by root 2 plus I into minus 1 by root 2 will be minus 1 by root 2 minus 1 by root 2. Therefore, square root of I becomes is x plus iy, which is minus 1 by root 2 plus I into minus 1 by root 2. Therefore, square root of I is equal to minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 I. So what are the square roots? 1 by root 2 plus 1 by root 2 I. So required square roots. Pehla answer. Okay, and this is, you can say, sometimes in many schools that भी पूछ लेते हैं, इस कॉम्प्लेक्स काफी बच्चे छोड़ देते हैं, ये टॉपिक में नहीं आएगा. पहला इसका आंसर है minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 I. That is the answer of question number 5. Third and sixth again are of the same type. Third and sixth again are of the same type. Let me do sixth. Okay. और हाँ, मेथड तो यही रखनी है. मेथड तो यही रखनी है. There is no other method. इसके अलावा दूसरे मेथड हैं. एक फॉर्मूला भी है, कोई गुजरात बोर्ड टेक्स्ट बुक में. But that formula, if I teach you, I don't believe the school teachers in CBSE schools as well as Gujarat board schools they will allow, because that is not given in NCERT textbook. So you cannot use that formula. Exercise 5.4 का मैं 6 कर. Let square root of 1 plus I is equal to x plus iy. X is a real number, y is a real number. So can I write x plus iy? X plus iy is equal to square root of 1 plus I. And yes, आपने देखा होगा I will end up doing 4 questions. जिसमें 2 will be product xy is negative. That was example number 12 and question number 1 of exercise 5.4. और ये मैं जो भी 5th और 6th कर रहा हूँ उसमें xy is positive. So that covers that basic logic. Squaring both the sides. Squaring क्या मिलेगा? x plus iy. X plus iy. The whole square is 1 plus I. So a square plus b square plus 2ab is equal to 1 plus 1 plus I is 1 plus 1 I. तो मैं बाद में लिखता हूँ. So I square is minus 1. So x square minus I square here minus 1 लिखेंगे. X square minus y square plus 2xy.
which is equal to 1 plus I will write as 1 plus 1i. Result I will write because I square is. So if the same story, if a plus bi is equal to c plus di, then a is equal to c and b is equal to b. So therefore x square minus y square is 1, which is and 2xy is 1. That is our result A. तो इसमें x square minus y square क्या आएगा 1 और xy क्या आएगा हाफ. ये याद रखना पड़ेगा. x square minus y square. See, x square y square easily you can end up getting. Please don't mess up. Okay? मुझे लगा इसके कैलकुलेशन पूरे अच्छे हैं. थोड़ा ध्यान देना. So x square minus y square is 1 and that is relation. That is result number 1 and xy becomes half. That is I will give as equation number 2. अब result क्या है? Now a plus b the whole square is a minus b the whole square plus 4ab. At the place of a you can visualize as x square. At the place of b you can visualize as y square. So the formula becomes x square plus y square the whole square is x square minus y square the whole square plus 4 x square y square and then you write टेक्स्ट बुक वाले ने अगर आप एग्जांपल रिफर करोगे ये दोनों कुछ लिखा ही नहीं है, इसने डायरेक्टली दिया है. अब काफी बच्चों को डाउट होता है दैट्स व्हाई मैंने 2 स्टेप ज्यादा लिखे हैं. ओके ये दोनों स्टेप्स क्यों लिखे हैं डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा यू अंडरस्टैंड. नाउ x square minus y square कितना है 1 2xy कितना है 1 by result is so x square plus y square the whole square is 1 square plus 1 square by 8. Okay, and then 1 plus 1 2. So x square plus y square will be x square plus y square the whole square is 2. So x square plus y square select the positive root 2. Square plus y square has to be root 2. So x square plus y square 1 plus 1. Therefore काफी बच्चे इधर स्क्वायर देते ही नहीं है, फिर उनका आंसर गलत आता है. x square plus y square the whole square is 2 and x square plus y square is positive, so we have to select the positive square root because for real numbers x and y x square plus y square has to be greater than equal to 0. So result number 3 क्या है? This becomes our result number 3. x square plus y square कितना है root 2. x square minus y square कितना है 1. yes ये result number 3. ये result number 1. x square और y square निकालना है, ऐड करो y square कैसे हो जाएगा 3 और 1 को ऐड करने पर x square plus x square 2x square is equal to root 2 plus 1. root 2 का वैल्यू कितना है 1.4. okay so वो याद रखना पड़ेगा. You will understand why when talking about the value of root 2. You will understand once I get to y square. So 2x square कितना आया? 2x square I end up getting root 2 plus 1. So I end up getting x square as square root of 2 plus 1 whole by 2. Keep it as this and you substitute in. Now x square minus y square or and x square plus y square is root 2. So x square is root 2 plus 1 upon 2 plus y square is okay. Substitute करो y square here and root 2 minus root 2 plus 1 whole by 2. Take the LCM. Y square is equal to 2 root 2 minus of root 2 plus 1 whole upon 2. So y square is 2 root 2 minus root 2 minus 1 upon 2. So y square कितना आता है? y square you end up getting root 2 minus 1. Now square कभी नेगेटिव नहीं होता है. y square is root 2 minus 1 upon 2 और स्क्वायर कभी नेगेटिव. काफी बच्चों का 1 minus root 2 आएगा, वो गलत है. root 2 का वैल्यू कितना है 1.4. So 1.4 minus 1 0.4 is positive. So that is perfect. काफी बच्चे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो उनका आंसर क्या आएगा 1 minus root 2 गलत है. So x square कितना आया? x
x square we are getting root 2 plus 1 upon 2, y square we are getting as root 2 minus 1 upon 2. Both the values are positive. X square is positive, y square is positive. X क्या आएगा? We don't know. Plus minus whole square root of root 2 plus 1. What is the answer? Okay. Yes. मेरा ध्यान से देखो तो whole root ही दिया है. Perfect. Plus or minus whole square root of root 2 plus 1 upon 2. और y can be plus or minus any positive square root or negative square root root 2 minus 1 upon 2. और हाँ लिख देने का because root 2 is greater than 1. So that nice way of writing, right? Okay. Give the explanation because root 2 is greater than 1. Now here 2xy कितना था? 1 plus iy. देखिए this expression 2xy कितना था? 2xy 1 था. Square minus y square is 2x 7 था. Now here 2xy is 1, so xy कितना है? Half. That is our equation number 2. Therefore, can I say xy is positive? So highlight the product of x and y is positive. When it is possible, when x is positive, at that time x has to be positive. Both the numbers, product of two numbers is positive. इसका मतलब both numbers are positive or both are negative. So x will take as positive, y is positive. And second case, therefore, so I will write xy is greater than 0. Therefore, these two cases will come. Y is greater than 0. Therefore, x is positive and y is greater than 0, or x is negative and y is negative. Okay? याद रखो. So first case and here. Okay. So x is positive, y is positive, or x is negative and y is negative. So first case I select x as positive square root of. So I select x as square root of 2 plus 1 upon 2. Y also will be positive. So y will be positive square root of 2 plus 1 upon 2. Yes. First case, what is the square root of? Question क्या पूछा था? Square root of 1 plus I. Square root of square root of 1 plus I. So square root of 1 plus I क्या था? X plus IY. So square root of 1 plus I turns out to be square root of root 2 plus 1 upon 2 plus I into square root of root 2 plus 1 upon 2. Getting the right as square root of 1 plus I is square root of root 2 plus 1 upon 2 plus whole square root of root 2 plus 1 upon 2 I. Am I here? Right? Second case, x negative, y negative. So you select x. I have a minus 1 on actually. Sorry. minus 1 आएगा. यहाँ भी minus 1. It is right. Square root of now. First square root which I am getting is right. This is perfect. It is. And second, आप प्लस करके मत लिखना. आप ऐसा है तो दो अलग-अलग आंसर्स करके लिखना. ओके? The teacher will not give you wrong because फिर आप प्लस और माइनस में एक साथ लेके करोगे तो बोलोगे सर हमारे चार आंसर आ रहे हैं. That is wrong. Second case में क्या आएगा? X is negative. Square root of minus root of negative root of square root of root 2 plus 1 upon 2. Y also has to be selected as negative, so minus of square root of 2 minus 1 upon 2. Okay, that is the second case. Square root of 1 plus I. So square root of 1 plus I. Square root of 1 plus I कितना था? X plus I1. Therefore, square root of 1 plus I is x कितना है? Minus square root of root 2 plus 1 upon 2 plus I into minus square root of root 2 minus 1 upon 2. So, square root becomes square root of 1 plus I becomes minus square root of root 2 plus 1 upon 2 minus plus into minus square root of root 2 minus 1 upon whole है minus minus
whole square root of root 2 minus 1 upon 2i. So two answers will be for that, then miscellaneous. और ऐसा है तो आप क्लब कर, प्लीज डोंट क्लब द आंसर्स टू राइट द आंसर इन द बैक. पहला आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है. सो व्हाट यू राइट, स्क्वायर रूट्स आर required square roots पहला ऑप्शन square root of root 2 plus 1 upon 2 plus square root of root 2 minus 1 upon 2i. कॉमा करके दूसरा. Do you think there is a need कि पहला स्क्वायर रूट लिख चुके हैं, सेकंड स्क्वायर रूट लिख चुके हैं, तो अलग अलग ये ऑलरेडी शोन के स्क्वायर रूट दिस टू कॉम्प्लिकेट करना है. फिर अगर आप क्लब करेंगे और फिर कुछ आंसर लिख रहे हैं, अगर आप मिस्टेक होगी, मेनी टाइम्स आई एंड अप कमिटिंग सम मिस्टेक्स, तो पूरा मार्क कैंसिल हो जाएगा. रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट पहला है और दूसरा इधर लिखो. रिक्वायर्ड ओके रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट्स पहला और दूसरा एक दो उसके नीचे सपोज तो पहला लिख रहा और दूसरा लिख रहा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस i इज इक्वल टू, हम इसका साइन ढूंढेंगे राइट, माइनस. सो नेगेटिव वैल्यू ऑफ x इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ root 2 minus 1 upon 2i. That's the final answer. Check all the times. 6 क्वेश्चन है टोटल, 6 plus 1 7 क्वेश्चंस हैं. एग्जाम्पल को मिला के I have done 7 से 4 क्वेश्चन. I believe that is more than enough to make you understand this type of, you can say, complex number कैसे करना है, कैसे नहीं करना है. Easy. So that finishes exercise 7 5.4 of supplementary. अगर ऐसा होगा तो उसके 3 क्वेश्चन जो बाकी हैं I will cover it up in the you can subsequent lectures when I'll be teaching few more important illustrations of that type. So we have covered all the types. Now we'll see if any question is remaining. No, nothing is remaining. Okay, now you see. Let me solve just one more question. You can say a typical type A question. Okay, so what I will do is that I will solve question number 12, example 12. Let me solve that example 12. क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आज तो हमने नहीं किए हैं. So let us see whether you are getting that question on your own as well. That you can say typical 3 mark question in any school exam. Find the conjugate of. Let's get it for you. Miscellaneous example number 12. I am doing. किया था. It was example number supplementary 473. It is also example number. Okay. Just 1 minute. Okay. So this is I am doing now miscellaneous example. I am doing miscellaneous example 12. वो जो मैंने किया था वो था example 12 of the supplementary material. मैं वही सोचूं कि same number कैसे है. तो I got it. That's the difference. Now find the conjugate of. Find the conjugate of. Conjugate पूछा है पहला सोच z लो. Let z is equal to 3 minus 2i into 2 plus 3i whole upon 1 plus 2i into 2 minus i. Now this is a very simple question and this can come for 2 or 3 marks. क्या करना है आपको? खाली इसको मल्टीप्लाई कर देना है. तो z is equal to डायरेक्ट कर सकते हो 3 times 2 plus 3i
minus 2i into 2 plus 3i whole upon 1 into 2 minus I plus 2i into 2 minus I. If you refer the textbook, see they have not shown this step. आप समझे? सारे क्वेश्चंस में हम लोग every sum which will be ending up writing 3 or 5 steps more डायरेक्ट कर सकते हो. 3 to the 6 plus 3 to the 6 plus 3 to the 9i plus minus into plus minus minus 4i minus into plus is minus into plus is minus 6i square whole upon नीचे कितना आएगा 1 into 2 plus 1 into minus 2 minus I plus into so plus 2 to the 4i plus into minus is minus 2i square minus 2i square. Now where becomes what I see उन्होंने डायरेक्टली किया है 12 कैसे i स्क्वायर की जगह पे -1 सो माइनस माइनस प्लस 1 सो 6 वैसे डायरेक्टली लिखते हैं बट 5i -6 -1 होल अपॉन 2 प्लस 3i -2 minus because understood वो लोग कौन सा स्टेप पहले स्किप करते हैं 6 प्लस 5i प्लस 6 होल अपॉन 2 प्लस 3i प्लस 2 वो लोग क्या लिखते हैं वो खाली मेंशन करेंगे i स्क्वायर माइनस और -1 into -6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 12. तो नेक्स्ट टू स्टेप्स भी आपको लिखने हैं. सो यू अंडरस्टूड. अब देखो यहां तक कि हमने जितने स्टेप्स लिखे हैं वी हैव डन 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स. वो लोग 3 स्टेप्स में काउंट पहुंचा है. ठीक है. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्सीलेंट. So therefore z is वो लोग क्या कहते हैं i स्क्वायर को -1 सोचते हैं. तो -1 into -6 plus 6 6 plus 6 12 and then 9 plus 5 i लिख देते हैं और फिर यहाँ पे -1 into -6 plus 2 plus 2 4 plus 3i. ओके. फिर उसके बाद यू नो व्हाट इज द मेथड. डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करने का which is 4 minus 3i. यहाँ पर कितना आएगा 4 plus 3i into 4 minus 3i. Now what I will do is that here I will do that step directly as well. Try to understand. Z is 12 into 4. 12 4s are 48. 12 into minus 3 minus 36i. 5 4s are 20i. Plus into minus 5 is 15 i square. पर नीचे a plus b a minus b so a square 4 का square 16 minus 3i का square 9 i square. अब आपको पता है i square क्या है -1. i square क्या है -1. तो i square की जगह पे आप -1 लिखो. i square की जगह पे आप ओके डायरेक्ट करना है. i square की जगह पे आप -1 सोचोगे तो -1 into -15 कितना होगा -1 into plus 15 48 plus 15 63 हो जाएगा. ओके सो 63 और वो -36 प्लस 20 -16 आएगा और नीचे कितना हो जाएगा i स्क्वायर इज -1 माइनस प्लस और प्लस 60 प्लस 25 हो जाएगा. सिंपल मेंशन करो बिकॉज़ i स्क्वायर इज -1. i स्क्वायर का -1 क्या करना आई बिलीव दिस विल बी द आंसर 63 minus 69 upon 25 divide individually 63 upon 25 minus 16 upon 25i. उसका कॉन्जुगेट पूछा है तो रिक्वायर्ड क्या पूछा है z का कॉन्जुगेट. तो रिक्वायर्ड इज z बार कैसे मिलेगा इसका कॉन्जुगेट क्या है 63 by 25 प्लस हो जाएगा 60 by 25i. एंड हाँ इसको फुल राइट की फॉर्म में यू कैन आल्सो राइट 63 plus 69 by 25. But it's better that we can do over here only. 63 by 25 plus 16 by 25 i. Easy? Got it? तो आप देखो यहाँ पे और प्रोसेस बढ़ सकते हैं क्या i स्क्वायर -1 लिखो and then you add and all that into very very lengthy. So better करो ऐसा 2-3 स्टेप आप कट करो. आप देखो यहाँ तक 6 7 8 9 10 11 स्टेप और वो 13 स्टेप्स होंगे. टेक्स्ट बुक वाले ने 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स लिखा है. ऑलमोस्ट हाफ सॉल्यूशन हमारा जो है. तो अंडरस्टूड. टफ नहीं है और एक बार रिवीजन हो गया. सो दिस इज मिसलेनियस एग्जाम्पल
12 we have covered all the concepts which are given in our textbook. Exercise के सारे concepts कर चुके हैं, miscellaneous exercise खत्म कर चुके हैं और supplementary भी हमने खत्म कर दी है. So practically I can say complex numbers is over. I might take 1 or 2 more extra video lectures covering few extra good quality questions of complex numbers and you can say few miscellaneous illustrations which are of good quality. Okay, so I'll end over here. That's it for today. Thank you. Keep revising, keep studying, and take care and don't waste your time. Okay, thank you.